Vice-Chancellor of Open University of Kenya. महामहिम डॉक्टर विलियम रूटो, केन्या के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जाम्बो, जोहार। जाम्बो। आज भारत की पहली राज्य की यात्रा पर महामहिम डॉक्टर विलियम रूटो का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी की केन्या यात्रा के बाद हासिल की गई उपलब्धियों ने हमारी ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत किया और आपसी हित के कई क्षेत्रों में हमारी साझेदारी का विस्तार हुआ। हमारी मित्रता अब एक मजबूत द्विपक्षीय रिश्ते में परिपक्व हो गई है, जो व्यापार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग पर आधारित है। इसके अलावा हमने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ अपनी साझेदारी का बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि हाल के दिनों में हमारे दोनों देशों के बीच मैत्रियों और विशिष्ट अधिकारियों के स्तर पर अधिक से अधिक आदान प्रदान हुआ है। इस वर्ष मार्च में मुझे केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश से मिलने का अवसर मिला। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में फर्स्ट लेडी श्रीमती रेचल रूटो को मेरे गृह राज्य ओडिशा में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा उनके मानवीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। केन्या की महिला नेताओं को देश के विकास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखना प्रेरणादायक है। केन्या के संपन्न भारतीय समुदाय, जिसे देश की 41वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, हिंद महासागर की लहरों को पार करते हुए हमारे देशों के बीच एक स्थायी पुल की समान है। केन्याई समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी अभिन्न भूमिका हमारे गहरे संबंधों और केन्याई समाज के समावेशी चरित्रों को दर्शाती है। अनेक केन्याई विद्यार्थियों ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत को चुना है। केन्या में पर्यटकों की संख्या में भारतीय पहले से ही 5वें स्थान पर है और यहाँ ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। ज्ञान और संस्कृति का ये आदान प्रदान हमारे दोनों समाज को समृद्ध बनाता है। भारत केन्या के प्रमुख व्यापार साझेदारों और निवेशकों में से एक है। केन्या में भारतीय व्यवसाय फल फूल रहे हैं और एक गतिशील द्विपक्षीय संबंध में अपना योगदान दे रहे हैं। महामहिम अपने ग्लोबल साउथ के प्रमुख मुद्दों के लिए वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। इस अवसर पर मैं पहला अफ्रीका क्लाइमेट समिट की मेज़बानी के लिए आपको बधाई देती हूँ और इस गंभीर वैश्विक मुद्दे पर आपके नेतृत्व की सराहना करती हूँ। भारत की अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाना हमारे लिए खुशी की बात है। ग्लोबल साउथ के हितों को बनाए रखने के आपके सभी प्रयासों में भारत आपका दृढ़ भागीदारी रहेगा। आपकी विकास यात्रा में एक विश्वसनीय पार्टनर बनने के लिए और आपकी प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में आपके साथ काम करने के लिए मैं अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करती हूँ। आप हमारे बीच आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को इस खूबसूरत साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम, देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, केन्या के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत और केन्या के बीच दोस्ती को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। Your Excellency, Madam President, Mr. Vice President, the Right Honorable Speaker, Ministers present, Governors,
senior government officials, allow me this evening, Madam President, to first and foremost thank you for the invitation you extended to me to visit this great country, and for all the courtesies and hospitality extended to me and my team while we have been in this great city of Delhi. Our people and nations are not strangers. Separated by an ocean, the two countries have been united by history, united by trade, by friendship, enterprise, and we have seen through many years peaceful interaction between our two countries. Kenya and India are not only maritime neighbors and trading partners. We share a long history shaped by similar events and often driven by identical, if not the same forces. We shared a colonial master, but today we share a robust democratic culture. Allow me to mention that our struggles and triumphs run parallel over time, and it is no wonder fields of endeavor and the determination to remain a force of good for the benefit of our peoples and for the benefit of humanity. Madam President, allow me to commend India for your leadership of the G7. And through your leadership in the G7, India consolidated the place of Africa and made it possible for Africa to be a permanent member of the G20. Those of us who come from the global south, and specifically from Africa, we appreciate India's leadership, your leadership and that of Prime Minister Narendra Modi, for making it possible for this feat to be achieved and for Africa to sit at the table at the G20. Let me also commend India's leadership and that of Prime Minister Modi on the leadership of and the place of Global South in the geopolitical space globally. Prime Minister Modi invited me to be among the voices of the Global South when I attended the summit virtually to provide a voice on the issues that are of mutual benefit and mutual interest between our two countries and the countries in the Global South. The similarity of our salient ways is a testament of the fiery furnace of violent history out of which, through much determined struggle, we emerged ready to forge a path into the future with courage, determination, and unwavering faith in the enterprising ways of our people. As you have said correctly, many people from this country were among the earliest entrepreneurs in Kenya. They came as workers, but they ended up as entrepreneurs, as business people, as farmers, and now as citizens of Kenya. India emerged first, and even now continues to lead the way. As far as models go, India has been
an exemplary older sibling and a loyal friend to Kenya. The world today is plunged into constant turmoil by more frequent, vast, and complex crises than in the past. Solutions to common difficult problems are increasingly elusive, and multilateralism is not handling these situations as it should. At times like this, partnerships with dependable partners and friends matter in building resilience and establishing robust mechanisms to anchor our confidence in the future. I am proud that Kenya and India are united by history, trade, and friendship, which are expressions of our common experience and shared values, most salient of which are the love for freedom and enterprise and the peaceful pursuit of progress in a robust democracy. Across the Indian Ocean, therefore, is a vast sea of opportunity and commonality, which can float all Kenyan and Indian boats in their voyages into the future. Every sector is sailing in this epic quest. Today, we have affirmed that whilst Kenya and India enjoy a proud history of successful friendship, what we can achieve in the future, given our shared values as well as our shared commitment, is far greater and will endure for the benefit of generations now and generations to come. I had a robust conversation with the government of India today, and I am very, very proud of the outcome of the consultations that we had. I am a witness to the unique way that India's leadership is committed to the pursuit of progress today and greatness tomorrow. It has been an honor to visit this wonderful country and a privilege to interact with both you, Madam President, and Prime Minister Modi, and I must say that I have been encouraged and inspired by what I see as the future of the relationship between our two countries. I am very clear in my mind that there is huge scope for trade, for investment, for business, for cultural exchange, for education, sharing of experiences in education, sharing of capabilities and experience in health, and many other spaces. Madam President, allow me to request for India's support for the upgrading of the only UN headquarters in the Global South in Nairobi, the UNEP and the UN Habitat. The Secretary General of the United Nations has proposed the upgrade of those facilities, and we are requesting for India's support so that the facilities in Nairobi can be upgraded to the same standard as those in other headquarters, UN headquarters globally. It is always inspiring to visit our great friends across the ocean. I request you, ladies and gentlemen, to join me in celebrating the long life and good health of my dear friends, the President of this great country,